Trends are actually movements over time. When we see the value of a particular asset or a liability or a stock price or anything over a certain period of time, then we observe that there are some changes. Sometimes that value goes up, and at times it remains there, and then there are times when it goes down. So when we look at these movements of a particular head of accounts values over time, we say that it is a trend. So a trend is nothing but an analysis of the changes in the values of a particular item. For example, if we talk about sales of a company, अगर उस कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ती जा रही हैं, तो हम कहेंगे there is an upward trend in the sales of the company. You must have heard about the stock market. स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत से ट्रेंड्स का एनालिसिस किया जाता है और स्टॉक मार्केट का अपना भी एक ट्रेंड होता है. इन न्यूज़ वी hear that the stock market has shown an upward trend, or for the last few days the market is showing a downward trend. So this means that the values are going up or the values are going down. So there are basically the possibility of just three trends. That is, either there'll be an increasing trend, or there'll be a decreasing trend, or there'll be constant values. That is, the trend is neither going up nor it is going down. ट्रेंड्स को देखने का एक आसान और अच्छा तरीका यह है कि हम वैल्यूज़ को ग्राफ की शक्ल में शो कर देते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच कैन बी यूज्ड टू शो द ट्रेंड्स. इन ग्राफ्स के अंदर ऊपर और नीचे जाती हुई लकीरें या बार्स या इसी तरह की और वैल्यूज़ जो हैं वो हमें ये बताती हैं कि क्या किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर कमी हो रही है या कोई चीज़ जो है वो आगे बढ़ रही है. ट्रेंड्स मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के लिए कैलकुलेट किए जा सकते हैं. यानी कुछ ट्रेंड्स हैं जिनको हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स कहते हैं. ऐसी वैल्यूज़ जो बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स बहुत वैल्यूबल होते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर तब्दीली बहुत तेज़ी से नहीं होती. यानी अगर हम एनुअल सेल्स का ट्रेंड देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास एक साल में एक ही वैल्यू होगी कि जिसे हमें कंसिडर करना है. सो वी नीड टू हैव लाइक 4, 5, 6, 10, 20 years to see a good upward or downward trend of annual sales. Similarly, if we talk about stock prices, where the prices fluctuate not every day, not every hour, but maybe every moment. So we can have even a one-day trend which will be showing so many ups and downs. So we may have got short-term trends, medium-term trends, or long-term trends. There are various methods. यानी ये ट्रेंड एनालिसिस कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही तरीका है जिससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं. बट ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं. और वक्त के साथ साथ जैसे कि ये एनालिसिस का सब्जेक्ट डेवलप होता जा रहा है और नए से नए टूल्स हमारे पास आते जा रहे हैं कि हम ट्रेंड्स को कैसे एनालाइज करें और उसकी बेसिस के ऊपर किस तरीके से फ्यूचर में देखने की कोशिश करें. ट्रेंड एनालिसिस किसी भी चीज़ का किया जा सकता है, जैसे कि अभी हमने बात की. यानी हमारे पास अगर कुछ रेशोज़ हैं, लेट्स से वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द लिक्विडिटी रेशोज़. हमने अपने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ा था कि देयर इज़ अ करंट रेशो एंड देयर इज़ अ क्विक रेशो एंड देयर इज़ अ कैश रेशो, एंड दीज आर द रेशोज़ व्हिच रिफ्लेक्ट the liquidity position of a firm or a business. So if we calculate the current ratio for, let's say, 2010 and then 2011 and 12 and 13 and 14 and onwards, and then we compare those ratios and we see that in which year this current ratio went up or in which year this current ratio went down. So that will give us a trend of current ratio over a period of certain years. Similarly, as we have discussed indexed analysis, where we get indexed balance sheets and indexed financial statements.
तो ये इंडेक्स्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, अगर इनकी वैल्यूज़ को भी हम साथ साथ रख कर और उसको देखें कि उसमें कहाँ कहाँ पर इजाफा और कहाँ कहाँ पर कमी हुई है, तो उस इंक्रीज और डिक्रीज को भी हम एक ट्रेंड की शक्ल में देख सकते हैं. So there can be a trend analysis of ratios, there can be a trend analysis of indexed financial statements. And similarly, there can be a trend analysis of just overall absolute financial statements. यानी वही प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर हम पैरेलल बहुत सारी ये स्टेटमेंट्स रख दें और ये देखते चले जाएं कि कहाँ पर इसके अंदर इजाफा और कमी हुई है, तो उससे भी हम एक बहुत अच्छा ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं. जैसे कि अभी हमने ये बात की कि ट्रेंड एनालिसिस टेबुलर फॉर्म के साथ साथ ग्राफ्स की शक्ल में भी होता है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है किसी भी यूज़र के लिए, किसी भी डिसीजन मेकर के लिए बहुत थोड़े वक्त में एनालिसिस करने के लिए. So financial statements, if presented in the form of graph, all the values of balance sheet, profit loss and cash flow, that can also be a very good trend analysis. And likewise, the other part of the analysis that we discussed in the previous modules, which was related to common size analysis, so we can also have a trend analysis of those financial statements which are vertically analyzed. यानी एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसका कॉमन साइज एनालिसिस कर लिया गया है एंड कॉमन साइज्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे पास मौजूद है, उसको अगर हम पैरेलल रखते चले जाएं बहुत से सालों के लिए, तो हमारे पास उस कॉमन साइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ट्रेंड हमारे पास आ जाएगा. So, in nutshell, we can say that trend analysis can be done of anything, any value which has got there some values there in every year or every time period. अगर वो value मौजूद है तो हम उसका trend analysis कर सकते हैं. ये trend analysis करने का हमें क्या फ़ायदा होता है? यानी बहुत सी जगह पर हम चाहते हैं कि ट्रेंड नीचे की तरफ जाए, यानी अगर कॉस्ट या एक्सपेंसेस का ट्रेंड है तो वील बी हैप्पी टू सी इट डिक्लाइनिंग, यानी हमारी कॉस्ट कम हो रही है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और हम पैट ऑन द बैक देंगे उन तमाम लोगों को कि जिन्होंने कॉस्ट को कर्टेल किया. और अगर हमारा रेवेन्यू का ट्रेंड नीचे जा रहा है, सो दिस इज अनफेवरेबल. सो वी वुड नॉट लाइक आवर रेवेन्यू ट्रेंड टू बी गोइंग डाउन, एंड दिस इज द ट्रेंड दैट वी वुड बी हैप्पी टू सी increasing or going up. Likewise, the profits, whether it is gross profit or it is net profit or it is before or after tax or EBIT or whatever it is, we would like to see all these trends of profits going up, and all the users of financial statements, all the stakeholders would like to see these trends going up. यानी अगर मैं शेयर होल्डर हूं, या मैंने कंपनी को लोन दिया है, या कंपनी के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं, या मैं कंपनी की मैनेजमेंट का हिस्सा हूं, मैं कोई भी स्टेक होल्डर हूं, मैं चाहूँगा कि प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ के ट्रेंड्स इंक्रीजिंग शक्ल में नज़र आए और कॉस्ट और एक्सपेंसेस के जो ट्रेंड्स हैं वो नीचे जाते हुए हमें नज़र आए. सो ट्रेंड एनालिसिस actually is a tool that that provides us the data or the information which then can be used to make the right decisions by various stakeholders.